Hello, good morning, everyone. Hello, good morning, everyone. I'm Sana Sheikh of FYBMM. Welcomes you to our third session of Vichardhara Club and to discuss on the topic Women and Sports. Earlier, we have completed discussion on the topic Swami Vivekanand ji and late Lata Mangeshkar ji. Now, I request our principal ma'am Principal and Dr. Asha Anand to share her experience related to our discussion, women and sports, as you were very good at sports during your school and college time. Over to you, ma'am. Yeah, thank you, Sana. Good morning, everyone, and welcome to this discussion on women in sports under the Vichardhara Club. Let me tell you, sports has the power to change lives. The ability to drive gender equality by teaching women and girls teamwork, self-reliance, resilience, and confidence. Women in sport defy gender stereotypes and social norms, make inspiring role models, and show men and women as equals. Several Indian women in sports have tried to break free from the shackles of discrimination, social deprivation, and cultural biases to establish a promising career for themselves. Female sportspersons have occupied an esteemed place in society by acquiring numerous roles other than just being mother. Their hard work and passion to prove themselves has helped them to attain respect, and they are finally acknowledged and appreciated. I would say the growth of women in sports is a remarkable outcome of their dedication and desires. There are several phenomenal women athletes that are admired and have inspired the young generation to step forward and live their dreams. When it comes to sports for women, things are not very easy for them, we all know, and they have to undergo hardships to rise above men. Even though men are more celebrated and paid higher in comparison to women, yet female athletes seek their way out of all the challenges through their dedication and hard work. Women have fought their way out and are at present being credited for their outstanding performance in different sports platforms. They surpass all obstacles, and it does not kill their spirit, as they are the ultimate game changers. Several players like Sania Mirza, Mary Kom, Mithali Raj, PV Sindhu, Sania Nehwal, Rani Rampal, to name a few, and others have made the nation proud with their glorious victory in different sports domains. I feel strongly about the unequal type of coverage that female players receive. Just to give you all an example, ICC Women's World Cup 2022 is being played in New Zealand. Tomorrow we have a match, India versus South Africa. How many of us know about it? Are the newspapers, TV news channels talking about it? If I ask you all, who is the Indian women's cricket team captain, I'm sure many of us may not be able to answer. Mithali Raj, who is the Indian cricket captain, has completed 150 matches and has captained 24 matches, an incredible feat indeed. How many of us knew Mary Kom? Only after a movie was made, we started noticing her. Similarly, the Phogat sisters, Geeta, Babita, Ritu, and Sangeeta. Did we know them before Amir Khan made Dangal? No. Why does it happen? How many of us know Rani Rampal's story? She's a national hockey player who represented India in Olympics. Her story of resilience inspires me a lot. From the electricity shortages to the mosquitoes buzzing in her ears, from barely having 2 square meals to seeing her home getting flooded when it rained, she has endured it all. Her father was a cart puller and mother worked as a maid. There was a hockey academy near her home, so she spent hours watching men practice. She wanted to play. Her father would earn rupees 80 a day and couldn't afford to buy her a hockey stick. Every day she would ask the coach to teach her to. He would reject because she was malnourished. He would say, "You aren't strong enough to pull through a practice session." She found a broken hockey stick on the field and began practicing with that. She didn't have training clothes. She says she used to run in a salwar kameez, but she was determined to prove herself. She begged the coach for a chance.
But when she told her family, they said, लड़कियां घर का काम करती हैं, खेलती नहीं हैं. हम तुम्हें स्कर्ट पहन के खेलने नहीं देंगे. She pleaded with them saying, please. Ultimately, her family gave in and she created her story. These are the striking differences that we see around us. From today, IPL starts. All the TV news channels, newspapers, FM radio stations are going gaga over it. Many of you students from BAMM would be in future become journalists, reporters, anchors. You should try to capture your audiences by bringing out the different aspects related to women and try to change the mindset of people around you. Only then the change will be visible. Otherwise, the glory of women sports persons will never come to the limelight. Wishing this session the very best, and I congratulate the faculty and the students of BMM department for this initiative. Thank you so much. Thank you, ma'am. It was good to hear you. You gave those experiences. Now I request our coordinator, dear Neha Kamble, ma'am, to give a brief note. Over to you, ma'am. Yes. Thank you, Sana, and thank you, ma'am, for such an insightful and encouraging welcome address, because we all know about it, but somewhere we don't take any action. We know it, but some kind of push or some kind of motivation is required in Indian society, I feel. Good morning, everybody. I'm Dr. Neha Kamble, and I would like to first of all say that we are very proud to say that recently Women's Development Cell of Srimati P.M. Roshni Women's College has completed a webinar series on the topic Indian feminism through the ages. And there we try to explore different aspects of Indian feminism, and we realize that women are quite strong. Rather, be it Indian, be it from any part of the world, they need some kind of motivation, and that motivation we need to give to our students, or rather the females all over. I would like to really take some of the points from madam's speech, wherein she said that women's World Cup is going on for cricket, and how many of we really watch it. But ma'am, I must say that at least this is for the first time this kind of event is happening, Women's World Cup, and it is getting high appreciation, at least in the cosmopolitan cities. And there are women who are taking more and more sports activities. I would like to give one more reference of Olympics. Bhavani Devi, for the first time India participated in fencing through Bhavani Devi. She's also come from interior part. Many of these female sports person, they came from interior part, be it Fogart sisters, or be it from the cricket team also. But they are coming ahead. That is the beauty of it. Another thing is hockey team. In Olympics, they were there, though they didn't go to the highest level, top level, but their performance was very well appreciated because of their their desire to win, and kind of the efforts they have taken was really marvelous. They tried to overcome all the challenges. So we must say that through this topic, why have we taken this topic? First of all, because we have celebrated International Women's Day recently. That is one thing. And secondly, sports activities are something which need some kind of motivation, because they make you not only physically strong, but they make you emotionally strong as well. It gives you some kind of positive energy, which you can use in other type of work also. So more and more sports activities should be taken up by students, and that is the objective of organizing this particular session under Vichardhara. Now I request Sana to continue with the session, and now students will be discussing this, and we have moderator with us, Miss Mohini Bamne. I would like to share that Miss Mohini also tried to overcome the challenges, wherein she was also involved in a lot of sports activities in her college days, and she was a part of the mega event called Cyclothon, which was organized by our college, wherein these girls who rode from Kashmir to Kanyakumari, they went on cycle
from Kashmir to Kanyakumari, and if we imagine the kind of mammoth and the challenging adventurous activity it was, but still girls manage, and college especially Kumudavali madam, Asha madam, and our trustees, their immense support, and the sports teachers, with their immense support, these girls could do it. So she is also there, so she will share her experiences also. I'm sure she must have come across a lot of challenges, but she has overcome it. So I hand it over to Sana now. Sana, please continue. Yes, thank you, ma'am. Now, without any delay, we are going to start our discussion on the topic women and sports. I request Sobia Sheikh from FYBMM to start over on the topic importance of sports in everyone's life. Over to you, Sobia. Hello everyone, my name is Sheikh Sobia. I'm from FYBMM. So I'm going to discuss on importance of sports in everyone's life. First of all, sport was started in 77 BCE. Before the days when sports were not so known, sport is also important in our physical and mental life. So some before children were more well as for freshness women in study community, teaching that less of life as such as teamwork, accountability, self-confidence, responsibility, and making group self-esteem, etc. If uh, sport is also important in our life and also in children's, freshers, women's in studies community, and also in learning industry. Teaches the learning of life such as teamwork, accountability, self-esteem, group also esteem. If we would talk about physical health, somehow there is no need for any other physical activity while we play sports. Uh, we get more seems like healthy body, and person who plays sports are not habited to other illness or any other physical problem related to our body. Sports help to control diabetes, manage weight, enhance blood circulation, and manage level of stress. It helps to strengthen our muscles and other types of physical esteems. So when sports was started, before there was not known that people were playing sport, it was known to be as game. And afterward this letter sports come from a Greece word. And now thanks for my explanation. Yes, thank you, Sovia, to have this discussion. It is very good to have knowledge about the importance of sports in everyone's life. Now, I'm going to talk on the topic importance of sports in women's life. As we know that sports is very important nowadays and also very challenging. Sports has been one of the most important socio-culture learning experiences for boys and men for many years. Those same benefits should be afforded them to get extra marks. Those same benefits should be afforded our daughter. It is important for all of us to know that these days schools motivate and encourage students to participate in sport, which enable them to get extra marks or grade for their participation in sports. This has resulted to more and more girls participating in sports and choosing sports as their career. Girl and women who play sports have higher level of confidence and self-esteem and lower level of depression. Girls and women who play sports have more positive body image and experience higher state of psychological well-being than girls and women who do not play sport. It is a myth that boys are more interested in sports than girls. There is no research that shows that boys are more interested in sports than girls.
We do know that girls are just interested in sport than boys when they are young. A combination of lack of opportunity, lack of peer learning group, support when they do play sports, and lack of encouragement causes them to drop out of sports at a rate that is 2 times greater than boys. In addition, research shows that if girls have not played sports by the time they are 10 years old, they are very unlikely to participate later in life. From Women's Sports Foundation, did you know that sports participation provides boys and girls with lot of benefits than getting in shape and having fun? The benefit of athletic participation for boys and girls are the same. They are additional sociological and psychological benefit for girls who play compared to those who don't. Now I want to ask Mohini ma'am that to share her experiences when she was doing her activities in sports. Over to you, ma'am. Hello, I'm audible. Okay. Yes. Okay, ma'am. Hello everyone. My name is Mohini. I'm a cyclist. मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. मैं बहुत दिनों से एक्साइटेड थी. 2019 में मेरा कन्याकुमारी का साइक्लोथॉन हुआ था. जस्ट 21 गर्ल्स थे हम लोग, और इतने सारे जब ये साइक्लोथॉन का निकला, पहले तो मैं बोलूं तो सब लोग एक्साइटेड थे, यार कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग करने मिल रही है. इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, एवरी गर्ल्स, कि हर एक कोई पार्टिसिपेट करना चाहता था उसमें. तो ऐसा लगता करके यार मैं भी करूं. मेरा बहुत दिनों से सपना था, मतलब बहुत सालों से, कि मैं कैसा कुछ तो टूर करूं जिसमें मैं वर्ल्ड टूर कर सकूं. बट ये कॉलेज ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, थैंक्स टू एसपीएनदोशी वुमेन्स कॉलेज, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए. क्योंकि अगर ये नहीं दे पाते तो पता नहीं, मैं अभी शायद अभी भी दूसरा कुछ करती रहती. मुझे स्पोर्ट्स इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इसमें बहुत खुद को मैं बहुत हैप्पी समझती हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है खेलना. और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक गर्ल्स ने स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. स्पोर्ट्स खेलने से ये फायदे होते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है. अब कोई भी बंदा, मतलब कोई भी टीम होती है तो उसे लीड करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. एज आप स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हो तो अपने आप वो अंदर आ जाती है स्किल्स. और सबसे पहले तो तीन चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है: लीडरशिप, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मनी. ये तीनों चीजें तो हमेशा होनी ही चाहिए, और इसे स्पोर्ट्स इसे ही इनकरेज करता है. आप जब भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो ये सारी तीनों चीजें आपको मिल जाती है. अगर मैं साइक्लोथॉन का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब 21 गर्ल्स का सिर्फ 21 गर्ल्स का सिलेक्शन होने वाला था, तो सब में एक फियर था कि बस हम लोग सिलेक्ट हो पाएंगे नहीं, या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी है तो बहुत सारे उसमें भी रहेंगे. तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो पहला अनाउंसमेंट हुआ, हर एक पोस्टर्स लगे हर एक कॉलेज में कि साइक्लोथॉन कश्मीर टू कन्याकुमारी होने वाला है, तो हर एक जन पार्टिसिपेट करने लगे. तो बाद में पाटिल सर ने भी उसमें भी रखा करके रोज जो कोई कंटिन्यू साइकिलिंग करेगा रोज के रोज. हमारी यहाँ पर कॉलेज में प्रैक्टिस होती थी, मॉर्निंग रोज हर एक राउंड होता था. पूरी मुंबई हम लोगों ने साइकिलिंग से घूमी है, तो उसमें एक अलग ही मजे थे करके. हर एक बार ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे करके, कभी ट्रैफिक जाम हो रहा था, कभी बाइक्स वाले कुछ सुन नहीं रहे थे, ऐसे बहुत सारी डिफिकल्टीज आई. पर हमने उसे भी ये करके कम करके, तो भी हम लोग उससे पार करके हम लोग आगे चले गए. तभी भी हमें टीचर्स लोग सपोर्ट करने के लिए थे, अंकल्स थे, जो प्यून स्टाफ था, तो उन्होंने सब लोगों ने सपोर्ट किया उस टाइम जब भी हम लोग मुंबई में कर रहे थे. उसके बाद हमारा फिजिकल फिटनेस भी हुआ. उसके लिए मैम ने हमारे कॉलेज में जिम है उसका फिजिकल फिटनेस देने चालू किया, न्यूट्रिशन, डाइट प्लान, ऐसे बहुत सारी चीजें कॉलेज ने की है. उससे पहले भी मुंबई पुणे मुंबई तभी भी साइक्लोथॉन निकली थी, और ये अभी कश्मीर टू कन्याकुमारी. मेरा सबसे खतरनाक वाला एक्सपीरियंस तो यूपी वाला था, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा चढ़ाव था साइक्लोथॉन में, क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम ऐसा डीप माउंटेन जैसा रहता ना, वैसे एकदम पूरा था. और हमें समझ में नहीं आ रहा था यार कैसे पूरा हो जाएगा. सब लोग नर्वस थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है आगे, हो पाएगा या नहीं, इतना बड़ा है. ऊपर से धूप 12-1 बजे तो इतना ज्यादा कड़क धूप निकलती थी, मानुस खड़ा भी नहीं रह सकता, इतनी तेज धूप रहती थी. बट टीचर लोग थे, पूरा प्रिंसिपल मैम, पाटिल सर, पुष्पा मैम, ऐसे और प्यून स्टाफ हमें मोटिवेट करते रहे, नहीं हो जाएगा तुम लोग से. हम लोग जो टीम था, हम लोग 21 का, हम लोग कभी भी
एक दूसरे को ये नहीं कि करके नहीं तरह से नहीं हो पाएगा, पर हम लोग सब लोग एक साथ लेके चलते थे, नहीं थोड़ा सा बाकी है, चल करते करके एक एक थोड़ा थोड़ा स्टेप हम लोग आगे बढ़ते गए, वैसा वो माउंटेन कंप्लीट होते गया। और एक अच्छी बात बोलूं तो खाने पीने के लिए बहुत मजे थे, हमारे कॉलेज ने बहुत अच्छी प्रोवाइड किया था हमें। और एक अलग ही ये मजे थे कि मतलब जब भी हम लोग साइक्लोथॉन कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रहे थे, हर जगह हमारा ये हो रहा था, क्या बोलते हैं उसे, सेलिब्रेशन हो रहा था करके, यार कश्मीर टू कन्याकुमारी गर्ल्स कर रहे, गर्ल्स को कभी किसी ने कभी इस पे रोड पे ऐसे साइकिल चलाते वो भी टीम के साथ कभी नहीं देखा था। जब हम लोग कर रहे थे, हम लोग को लोग मोटिवेट कर रहे थे यार कि ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और स्पेशली जब हम लोग कश्मीर से निकले, तभी एक आर्मी वाले थे वहां पे, आर्मी आर्मी की गाड़ी जा रही थी, वो भी हमें देख के मोटिवेट कर रहे थे, ऑल द वेरी बेस्ट, आप आपके डेस्टिनेशन को जल्दी पहुंचो, बी केयरफुल जाना। और अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा वो। और हम लोग जाते जाते पुलिस वाले रहते थे, वो गाने सॉन्ग सब बजाते थे करके हम लोग मोटिवेट हो पाए, एनर्जी डाउन ना हो, ऐसा सब था। मॉर्निंग हमारी स्टार्टिंग ऐसी थी कि मॉर्निंग हम लोग 5 बजे उठते थे, उसके बाद पूरा फ्रेश वगैरह होते थे, उसके बाद नाश्ता होता था हमारा, नाश्ता होने के बाद मिल्स वगैरह मिलते थे और बार्स जो भी है वो मिलते थे। उसके बाद हमारा जो साइकिलिंग स्टार्ट होता था, फिर बीच में एक ब्रेक, फिर से साइकिलिंग करना। रोज हम लोग है ना 150, 130, 145 ऐसा रोज किलोमीटर हम लोग पार करते थे। और फाइनली हम लोग फिर कन्याकुमारी पहुंच गए, वहां पर भी हमारा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। फिर से यहाँ से केरल, यहाँ अपने कॉलेज की भी पिकनिक गई थी केरल साइड में, उन्होंने भी वेलकम किया। बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहां पे भी। थैंक यू मैम। हेलो। Yes, Mohini, that was really good. I can recollect all those days and those memories. मतलब आप लोग वहाँ experience कर रहे थे और यहाँ पे हमें रोज update भी मिलता था, and we were also like every day having like these blessings or prayers for you कि आपका journey successful हो और अच्छे से हो. And it was, I think, everybody was very positive about it, and that positivity Yes you मैम। got because of the, like, you know, sports activities. And now the confidence which I am finding in you, know, you are very confident now, so maybe somewhere your sports activities and that cyclathon has contributed for that, I guess. Yes So let us continue. मैम। हाँ, बोलो, yes, continue मैम Mohini. एक बात मैं पहले सब गर्ल्स को बोलना चाहूंगी, मैम मैं जब 10th में थी ना, बहुत एकदम शर्मीली थी, कुछ ज्यादा बोलती नहीं थी, आपने भी देखा फर्स्ट ईयर में बहुत शांत रहती थी, कभी किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। बट जब से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, तब से मैं हर एक इसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं गर्ल्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि आप पार्टिसिपेट करो, भले उसमें कुछ अचीवमेंट हो या ना हो, डजेंट मैटर, बट आपका है ना जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उससे जो नॉलेज मिलता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। मैंने कभी भी कॉलेज में ऐसा मैम को एक बार भी नहीं दिखा रहेगा करके मैं किसी में पार्टिसिपेट नहीं की हूँ, हर एक चीज में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैम को बस ये बोलती थी मैम मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैम फिर आगे का देख लेती थी, ठीक है मोहिनी जाओ तुम लोग। और मैम जो भी स्टडीज का रहती थी, मैम बहुत अच्छे तरह से हैंडल कर लेती थी, करके आने के बाद तुम्हें स्टडीज भी करनी है, तुम्हें जो भी ना समझे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें फिर से सिखाऊंगी। मैम का ये रहता था, मुझे वो मैम का मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ऑल टीचर्स आर सपोर्ट मी। भले वो मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, एनसीसी में भी रही हूँ 3 साल, स्पोर्ट्स प्लस एनसीसी, इट्स वेरी मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि एक साथ मुझे दो मैनेज करना रहता था। एक तो स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम दो, प्लस स्टडीज करो, फिर एनसीसी के लिए भी जाओ। कभी मुझे ऐसा पता नहीं करके मैं कभी लेट कॉलेज आई हूँ, जो भी रहता था मॉर्निंग, जो सुबह में आती थी कॉलेज में, भले ही 6 बजे 7 बजे, वो डायरेक्ट शाम के 6 या 7 बजे ही निकलती थी। प्लस मेरा पार्ट टाइम जॉब भी रहता था। इट्स वेरी मल्टीटास्किंग फॉर मी, क्योंकि और मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता है हर एक गर्ल्स ने मल्टीटास्किंग करना चाहिए, और स्पोर्ट्स में भी ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, आपको एक साथ बहुत सारी चीजें लीड करनी होती है। और जब भी आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप एज अ कोच करके आप कहाँ पर भी ज्वाइंट हो सकते हो, मनी तो मिलता ही है, प्लस आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है। और मुझे जब से मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैं यहाँ पर एमटी एडुकेयर में लगी,
मतलब कैसे एक अल्टरनेट जो एक फ्लो रहता है ना, आप जल्दी जल्दी आपके गोल्स आप अचीव करते जाते हो. थैंक यू मैम. We would like to know more about it from you, Mohini, about sports activities. But there are other students who wish to speak on some other related topic. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am, for sharing your experiences. And now I request Priyanshu to continue further the discussion on the different sports played by women in different criteria. Over to you, Priyanshu. Namaste and good morning to everyone present here. So as Sana Didi and Mohini ma'am discussed about the importance of sports in women's life, I would like to highlight about the phenomenal female athletes who are changing the game every time they play. So things are not very easy for female athletes in India. They see every day how men doing the same thing as them are celebrated and paid more. How people ask men about their future in sports and to them about marriages. How people are still more interested in their clothes than their sporting excellence. It still doesn't kill their spirit, and for that alone, they deserve huge credit. Here's the list of female Indian athletes who are probably the best game changer we will ever know. Our tennis superstar, Sania Mirza. From turning professional at age 16 to someone who held the number one rank in double for 91 weeks, Sania changed the scene for Indian tennis. Boxer Mary Kom. The words female boxer are not taken very well in the country, which still has reservation about working women. Mary punched the stereotypes, and the results are there for everyone to see. Even we know that a movie too has been made about her life. Cricketer Maithili Raj. The captain of Indian cricket team, Maithili is the highest scorer in the women's international cricket and the only female cricketer to surpass the 6,000 run in ODI. Maithili is also the only Indian cricket captain, male or female, to lead India to the World Cup final twice. Badminton champion Saina Nehwal, the first Indian badminton player to win an Olympic medal. Saina Nehwal can totally be credited for making the sport so popular in the country. She is the first female and the second Indian shuttler to be ranked first in the world and has been awarded with Arjun Award, Padma Shri and Padma Bhushan for her achievements. Wrestler Geeta Fogart. Freestyle wrestler Geeta Fogart became a household name after she won a gold medal in wrestling at the Commonwealth Games 2010, something that has not been done before by any wrestler, whether it's male or female. She is also the first Indian female wrestler to have qualified for the Summer Olympics 2012, where she lost out on a bronze. Wrestler Sakshi Malik. Sakshi's bronze in wrestling ended India's medal drought at the Rio Olympics 2016, and that instantly made her an inspiration for the billions of Indians. Badminton champion PV Sindhu. PV Sindhu was 21 when she became the first and the only Indian to win a silver medal in badminton at Olympics. Archery, Deepika Kumari, the unsung star of Indian sports. Deepika Kumari is a former world number one and it's time we recognize and applaud for her achievements. Gymnastic Deepa Karamkar. Despite being born with a flat foot, Deepa did not give up on her dreams of becoming a gymnast, and we thank God for that. Chess champion Tanya Sachdev. Not many people know Tanya is the most prominent female player in chess and has many titles to her name. Every age when children are giving their board, which is no less than any achievement. Rani was representing the country at the World Cup at that time. She now is part of the team. Rani's breakthrough tournament has Champions Challenge tournament, where she was at the top goal scorer and the young player of the tournament. Deepika is India's premier squash player, who was the first Indian to break into the top 10 in the PSA women's ranking. She was started getting noticed in 2011 when she won 3 Women's International Squash Player Association 2 titles and attained a career best ranking of 13. For centuries, women have been told that they are inferior and weaker to men, so much that at this point it has become an exception rather than a fact that carving their way out of this complicated web of ideas are female athletes of the country.
Thank you. Over to you, Sanadi. Yes, thank you, Priyanshu, for giving this information about those achievements covered by women in sports. With further discussion, I request Mahek to talk on the challenges faced by women in sports. Over to you, Mahek. Good morning, everyone. I am Mahek from FYBMM. As we all know, and as our respected principal ma'am said, there are many challenges for women in sports. The major challenges are social, psychological, financial, family issues, and there are a lot many. If you are a sportswoman, there are many sportswomen who didn't get support from their family members. Society thinks a woman has a lot many responsibilities to fulfill. For the reason she is not fit to be a sports person. There are a lot many questions which she will surrounded with when she chooses to be in sports. Financial problems, like many sportswomen do not get financial support or benefits from their family, society, government, which demotivates them. These days, sexual harassment is very common. Many sportswomen faces these challenges. Due to the above mentioned reasons, challenges leads to psychological problems to a woman. According to my perception, women are not only the backbone of the family, but also of society. I want to ask the Mohini ma'am. Mohini ma'am, can I ask you a question? I want to ask about the challenge. हेलो हाँ हेलो आई वांट टू आस्क मैम, आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए थे स्पोर्ट्स चूज करने के लिए? सबसे पहले तो स्पोर्ट्स यही एक बड़ा चैलेंज था करके स्पोर्ट्स में लड़की जा रही है तो बोलते करके अरे वहां पर जाएंगे तो फिर हड्डियां विड्डियां टूटेंगी, लग जाएगा किधर। तो सबसे पहली बात तो ये आती है। फिर से सेकंड आता था मेरे लिए कि कपड़ों का चैलेंज आता था करके सबसे पहले तो छोटे कपड़े पहनने पड़ते थे। मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ तो साइक्लोथॉन में भी रही हूँ और कबड्डी में भी रही हूँ, तो ये दोनों के लिए मेरे कपड़े का बहुत इशू रहता था। घर पे इतने छोटे छोटे कपड़े, वो भी इतने लोगों के सामने तुझे ये करना रहता है, तुझे खेलना है वहां पे, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। बट मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी कपड़े डजंट मैटर, मतलब कपड़ा का कुछ नहीं रहता है, मेरा परफॉर्मेंस वही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत रहेगी। तो मेरा यही था। सबसे पहले तो मेरे घर पे भी यही था। मैं जब भी कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग कर रही थी तो मेरी मम्मी को खुद को डाउट था कि ये कर पाएगी या नहीं। बट जब मैं सुबह 5 बजे उठ के जब ये प्रैक्टिस के लिए जाती थी, शाम इतने देर तक आती थी, और जब ये ना टीचर लोग ने मेरा परफॉर्मेंस के बारे में मम्मी को तारीफ की, तभी मम्मी को लगा करके नहीं मेरी बेटी कुछ तक कर सकती है। जब मैं करके आई तो मुझे मम्मी को बहुत अच्छा लगा। ये तो सबसे बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए। और सबसे पहले तो दूसरे बोलने के ऊपर बिल्कुल भी मत ध्यान देना, अरे ये क्या कर पाएगी। सबसे पहले तो यही बड़ा सवाल होता है, क्या कर पाएगी। जो कर पाएगी वो तो दिखाई देती है, आप कम बोलो और ज्यादा करके दिखाओ। मैंने तो ऐसे ही किया मेरे लाइफ में। मैंने बाकी लोग को जो भी रहता है उनको इग्नोर किया है। मुझे बहुत लोग बोलते थे करके कुछ नहीं करेगी, ये बहुत शांत रहती है, इसमें कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये क्या कर पाएगी। तो मैंने शांत रह के मेरा परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर किया और उसे दिखाया सबको लोगों के सामने कि यार मैं ये कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए चैलेंजेस थे। थैंक यू महक एंड मैम। जैसा कि आपने कहा बहुत सी चैलेंजेस है, तो आज भी बहुत सी मतलब हो रही है दुनिया में, अभी भी बहुत सी बातें ऐसे हो रही है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं ना पैर खींच लेते हैं लड़कियों के। हाँ। अगर घर वाले मान भी जा रहे हैं ना तो ये दूसरे जो बाहर वाले हो जाते हैं और रिश्तेदार तो सबसे ज्यादा हो जाते हैं बोलने के लिए कि नहीं कुछ कर पाएगी। तो इसीलिए मोटिवेट तो इसके लिए मुश्किल होता है आज के दौर में। आज तो जैसे डिप्रेशन का माहौल चल रहा है, आज के दौर में मोटिवेट रहना बहुत ही जरूरी है, मगर वो बोलते ना बहुत कम लोग हैं जो मोटिवेट रह पाते हैं। हाँ, तो मैं इसके बारे में भी आपको बोलना चाहूंगी, मोटिवेट करना है तो खुद को ही मोटिवेट करो, दूसरे वाले तो आने वाले है नहीं मोटिवेट करने के लिए। आप चाहिए तो मेरी को तो मैं बोली कि अगर उनकी मूवी आपने किसी ने देखी होगी तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर एवरी वुमेन। चलिए भले ही आप उसका ये
मूवीज देखोगे उसमें ही सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि मेरे को हमने जो खुद के लिए जो स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है या उसकी पूरी जर्नी उसमें बताई गई है, मैं हमेशा उसके मैं जब भी मॉर्निंग में उठती हूँ ना, उसके पहले गाने सुनती हूँ। उससे जो एनर्जी आती है मेरे में, मैं पूरा कुछ भी रहेगा, स्ट्रेस हो कुछ भी हो, मैं सारी चीजें भूल जाती हूँ। वो रिदम ही ये वैसा मेरे है। लिए बेस्ट था। हाँ एक्चुअली तो खुद को मोटिवेट करना बहुत, क्योंकि हर एक बार लड़के लोग को ये करना चाहिए करके नहीं, मैं आज कर पाऊंगी। आप खुद का एक टारगेट सेट करो करके मुझे ये अचीव करना है, हर दिन उसके बारे में सोचो आप। और है ना, पावर ऑफ अट्रैक्शन तो ये सबसे बड़ा एक लॉ है, जो अगर आप कुछ सोचते हो तो उसे डेफिनेटली करने की एक शिद्दत रखो। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, बाकी लोग को इग्नोर करो आप। तो आपकी बातों को और महक के मतलब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए बिना किसी डिले के मैं श्रुति से कहती हूँ कि जो फैसिलिटीज हमारे गवर्नमेंट ने वुमेन्स लोग को स्पोर्ट्स में दी है, उस चीज को प्रेजेंट करने की, उस पर बातचीत करने की। ओवर टू यू श्रुति। हाँ Thank you, Miss Sana, for giving me over the mic. And Miss Mohini, we are really glad to have you with us. So, good morning, everyone. I'm Shruti Pandey from first year BA Mass Media Department, and I will be talking about the facilities which are provided by the government. So, the government of India nowadays has been very secular, or we can say it has been very peculiar about how they treat a sports person over. So, starting from the first scheme I will be talking about is Target Olympic Podium Scheme, that is TOPS. The TOPS scheme or the Target Olympic Podium Scheme was started by the Indian government in the year 2014. As the name suggests, this was the scheme which was first established by the Ministry of Youth Affairs and Sports, MIAS, with an aim to realize India's Olympic medal dreams at the 2016 Rio de Janeiro and the 2020 Tokyo Olympics. Under the TOPS scheme, a committee by the name TOPS Elite Athletes Identification Committee was constituted to identify the athletes who have the potential to win an Olympic medal for the country. So basically, this scheme is for the people who are going for the Olympics and to an international level. The members of the committee are selected by the MIAS with special emphasis on representation from high priority sports like archery, wrestling, badminton, hockey, shooting, and boxing. In the year 2018, the MIAS earmarked a total of INR 100 crore for the funding of athletes under this scheme. So under this scheme, a lot of things have been happening, and since 2018, this scheme has been successful for the people who want to appear for the Olympics and to represent their country on an international level. The second scheme we are going to talk about is Khelo India. The Khelo India scheme, which literally translates itself into Play India, was started in the year 2018 by the then sports minister and former Olympic medalist Rajyavardhan Singh Rathod. Under this scheme, the government wishes to develop a strong-rooted sporting culture in India right from the grassroots level. The Khelo India Youth Games and the Khelo India University Games are a part of the Indian program. So basically, this scheme is on a national, state level, and in this scheme, there are two different games which happens. The first is Youth Games, and the second is at a University Games. The government of India allocated a total of INR 657.71 crore for this scheme for the financial year 2021 to 2022. This scheme majorly works to identify potential talents in the high priority sports and then provides them with the financial assistance ranging from INR 5 lakh to INR 8 lakh per annum. The third scheme we are going to talk about is National Center of Excellence, NCOE. The Ministry of Youth Affairs and Sport, MIAS, in the year 2019 announced the establishment of 20 national centers of excellence throughout the country. The main vision of these centers is to groom athletes for 2024 Paris and 2028 Los Angeles Olympics. Each center of excellence is designated fund for 4 to 6 selected sports. The Sports Authority of India promotional schemes, which are mentioned over here, are the next scheme I am going to talk about. The Sports Authority of India, SAI, promotional schemes have been established by the SAI across its 273 sports centers in the country. The main aim of these promotional schemes is to identify the potential sports talent and support them in all the way possible.
The SAI promotional schemes include National Sports Talent Content Scheme, NSTC, Army Boys Sports Company Scheme, ABSC, and SAI Training Center Scheme, STC, and Special Area Games Scheme, SAG. While the NSTC and ABSC schemes are sub-junior trainees, the STC and SAG are for the junior level trainees, and the COX is reserved for senior level athletes. The SAI allocated a total sum of INR 7,600 crore in the financial year 2018 to 19 for this scheme. So the government of India has been very attentive towards the sport faculties for the people who have the potential to appear on the international level as well as on the national level. So with this, I would like to hand over this to Ms. Sana to continue the session further. Thank you. Yes, thank you, Shruti, for Faculties for the people who have the potential to appear on the international level as well as on the national level. So with this, I would like to hand over this to Ms. Sana to continue the session further. Thank you. Thank you, Shruti, for those information which you mentioned above in our talk. Now, Mahek wants to ask some question to Mohini ma'am. So I over to Mahek. Thank you, Shruti, for the people who have the potential to appear on the international level as well as on the national level. So with this, I would like to hand over this to Ms. Sana to continue the session further. Thank you. मोहिनी मैम, हाँ जी बोलिए। जैसे सब बोलते हैं अगर कि तुमको स्पोर्ट्स में जाना है तो सोसाइटी वाले यही बोलते हैं कि वहाँ पे हरासमेंट्स होते हैं, तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा सच है, होता है? जी हाँ, मेरे होता है एक्चुअली, बट कैसे होता है ना, अगर आप आवाज उठाते हो हरासमेंट के ऊपर, तो हाँ वो डेफिनेटली चीजें कम हो सकती है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी अपने सोशल मीडिया पे भी देखा रहेगा, स्पोर्ट्स के लेवल पे तो वो ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यार किसी को भी ये नहीं देखा जाता कि गर्ल्स आगे जा रही है, या गर्ल्स को हमेशा पीछे खींचते हुए देखा है हमने। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ वो सारी चीजें होती है इसमें, अगर उसके खिलाफ अगर आवाज उठाते हो वो सारी चीजें हम कम कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी ऐसा आ चुका है कि ये अगर हरासमेंट होती है तो हम लोग उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, तो उस लॉ को हमें फॉलो करना चाहिए, और उसके जो भी कार्रवाई है तो उसे भी हमने हर एक गर्ल्स को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, करके अगर स्पोर्ट्स में ऐसा चीजें होती है तो उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमें होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यस, थैंक यू मैम आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि हमें आगे जाके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रोशनी से, जो आगे बताए कि जो भी डिफरेंट क्राइटेरिया में स्पोर्ट्स वुमेन लोग ने खेले उनके अचीवमेंट और वो कौन कौन है वो बताने के लिए। ओवर टू यू रोशनी। Thank you, Sana. Good morning, everyone. I'm going to discuss about some remarkable sports person in international events. First of all, Aishwarya PC. Aishwarya PC is an off-road racer. At the age of 21, she made her debut at the TVS
one make race championship for women. After 3 years, at the age of 24, Aishwarya won the Baja Argon FIM series in Spain, an international motorcycle event, and became the first Indian to win such a race. Aishwarya started, uh, एक second. Sorry. Aishwarya started biking for an MTV show at the age of 18 and rode from Gujarat Kutch to Meghalaya in 24 days. With 6 championship titles from on-road to off-road events, leading the World Championship in the women category, Aishwarya has turned the tide with it comes to motorcycling. Another one is Anam Hasan. Anam Hasan, where women and bikes are considered as poles apart. Anam Hasan took women's biking to another level by becoming a stunt athlete. Anam is the only Indian to have participated in an international stunt competition and won 2017 and won in 2017. She is also the first woman to ride to ride Khardangla in Ladakh, covering over 2,000 kilometers on a TVS scooty. Not only in stunt, but Anam also succeeded in completing the toughest racing event, Desert Storm, in a one go. Women can't ride bikes is the constant notion we have been fed with since inception by society, who throws suspicious glance at every girl behind the society and steering wheel. And yet here's one rebellious 21-year-old girl rock star who is breaking all such stereotypes and proving the world that women can do everything, like literally everything. And the last but not the least, Padma Shri, Khel Ratna and Arjuna awardee Deepa Malik in Paralympic Championship. Paralympic is the major international sports competition for athletes with disabilities. Deepa Malik has become the first Indian woman ever to win a medal at Paralympic Games. She has won a silver medal in shot put F53 category with lifetime personal best performance of 4.61 meters. She started her career at the age of 36 and she is paralyzed below chest, but her vision is in every arena of life, be it as an athlete, as an entrepreneur, or as an social activist. I have strived to serve the tricolor. I will continue to devote myself to the people with the same zeal and energy. It has been an honor and privilege to serve and represent India, and I would love to continue doing that. Thank you. Yes, thank you, Roshni. It was good to hear this about the achievements conquered by the women in sports. I would like to ask Mohini ma'am that कि मतलब जैसे आपको कैसा फील हुआ जब आप अचीव कर लिए इतना मतलब आपकी कैसे हैप्पीनेस तो वो तो बोले उसकी लेवल ही अलग होती है, मगर जो सब लोगों ने आपको अपोज किया और आपने वही चीज करके दिखाया, तो उस चीज में आपको मतलब कैसा मतलब फील हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ या उससे ज्यादा मुझे और करना चाहिए? अगर मैं साइक्लोथॉन की बात करूँ या मेरे फर्स्ट जो स्पोर्ट्स था, मैं जब फर्स्ट मुझे मेरे घर पे ऐसा था करके मैं कभी गर्ल्स है हम लोग, मेरी बहन हम लोग 3 जन हैं, तो पापा ये हमेशा रहता करके नहीं मेरी बेटी मैं हमेशा अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती रही हूँ, तो पापा को एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेरी बेटी कुछ तो अचीव करेगी। और जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्पोर्ट्स में जब ये फर्स्ट प्राइज लाया था घर पे, तो घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे, उनके चेहरे का जो हैप्पीनेस था तो मैं और डबल खुश हो गई करके यार मैंने कुछ तो अचीव किया मेरे लाइफ में।
और ऐसा रहता है करके अपने एरिया में जो रहता है करके, हाँ अगर आप फर्स्ट कुछ अचीव करते हो तो उसका हैप्पीनेस अलग ही रहता है। अगर मेरे डिपार्टमेंट का अगर बीएमएम का बोलूं तो कश्मीर टू कन्याकुमारी करने वाली मैं पहली डिपार्टमेंट की फर्स्ट लड़की थी। एक अलग ही हैप्पीनेस था यार, क्या करूँ क्या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए, और एक अलग अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि यार इतना बड़ा ये शायद किसी ने किया होगा। थैंक यू। और क्या और क्या और आप पूछ क्या रहा मतलब आपने? अचीव करना चाहते हो और आगे आप मतलब और कौन से पड़ाव तक पहुंचना चाहते हो? मुझे आपका एक्चुअली आगे और स्पोर्ट्स क्या में गोल है? मुझे एक्चुअली आगे स्पोर्ट्स में स्टेट नेशनल भी खेलना है आगे जाके। और मेरा एक बचपन से सपना रहा है कि मैं एज अ इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ। तो एक मेरा वो सपना है कि मैं जल्दी से, आई होप मैं जल्दी अचीव कर पाऊँ। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप कैसे प्रिपेयर करोगे यहाँ तक पहुंचने के लिए? यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरा यहाँ पर अभी एडिटिंग का ये भी चल रहा है। एट ए टाइम मेरा 2 काम चल रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर इंटर्नशिप भी मेरी चालू है। यहाँ पर से घर पे जाने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह हो ली तो फिर से स्टडीज के लिए बैठना, फिर उसके बाद रोज प्रिपरेशन करना उस चीज के लिए। तो ऐसा सा मतलब बहुत बिजी एक्टिविटीज रहती है। हमेशा खुद को पुश करो करके, नहीं तुम कर सकती हो। यहाँ पर से जाने के बाद एक थकावट सी महसूस होती है करके, यार इतना पूरा सब काम था और अब थक गए हो तो नहीं हो पाएगा आज के दिन, चलो कल कर लेते हैं स्टडीज। ऐसा हमेशा मेरा होता रहता है। बट एक टाइम पे लगता है करके नहीं, अगर मैं आज स्टडीज नहीं कर पाई तो मैं शायद ही मेरा गोल जल्दी अचीव नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए एटलीस्ट 1 घंटा मैं खुद के लिए देती हूँ, और देना चाहिए एक्चुअली मेरा गोल अचीव करने के लिए मुझे। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लगा मतलब आपके सुन के आपसे कि इतनी सारी मोटिवेशनल लाइंस भी आपने बोली है, जैसे कि किसी का जी हाँ। सुनो, अपने मन की करो, जो मतलब ठानी है उसको करके ही रहो। सो हाँ Mohini, it was really nice to hear you. I just wanted to ask you, do you want to give any advice to the students or the listeners? We यस are at मैम। the end of the session, so I just want to ask that. Please give us last advice. ओके ओके मैम। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी करके, आप गर्ल्स हो तो आप कभी किसी को मतलब खुद को डिमोटिवेट मत करो। गर्ल्स हो, बेस्ट हो आप हमेशा। इतने सारे लड़के लोग, अगर आपने किसी इतने सारे लड़के लोग ने कुछ अचीव किया है तो आप भी कुछ तो अचीव कर सकते हो। आपका पैशन जो भी रहो, आप फुल ऑफ 100% उस पैशन को केयर करो। नहीं ये मेरा पैशन है तो मैं इसमें 100% दूंगी। मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने एक भी अपॉर्चुनिटी कभी उसे खाली नहीं जाने दी। मैंने जितने भी अपॉर्चुनिटीज मिली उसको मैंने 100% दिया है। भले इसमें आप है ना ये ध्यान में रखो, अगर आपको चैलेंजेस आते भी है ना तो आप है ना ये मत सोचो करके ये चैलेंजेस है मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा मत सोचो। चैलेंजेस सारे आने दो यार, मैं डट के खड़ी रहूंगी करके तू मतलब बोलते हैं ना करके, नहीं मैं उसकी एक मिनट। हाँ, अगर आपका चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसे 100% देने की कोशिश करो। खुद को कभी डिमोटिवेट मत करो। कितने भी लोग बोले इग्नोर करो। टीचर्स टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगी, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। खुद को एक अच्छा मोटिवेट रखना। और मैं बोलेगी कि स्पोर्ट्स खेलो, क्योंकि स्पोर्ट्स से फिटनेस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ता है, और आप हर एक चीज ना स्पोर्ट्स से बहुत जल्दी अचीव कर पाते हो। और एक मल्टीटास्किंग रहता है, करके आप लड़की हो तो कुछ मल्टीटास्किंग नहीं, यार यार लड़की है नहीं कर पाएगी, ऐसा मत सोचो। आप लड़की कर सकती है, उसने करके दिखाया भी है। अब आपकी बारी है, फ्यूचर्स जो है अभी एस्पिरेंट्स, उनकी बारी है कि वो भी कुछ कर दिखाए। अपने कॉलेज में से ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कैप्टन बनी है, बहुत सारे प्रोफेशन में है। आपके पैशन आप फॉलो करो बस। थैंक यू मैम। सो अब मैं हेप मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे हमें। ओवर टू यू। So yes, good afternoon all. So I remember a quote by Sania Nehwal. Do your best to achieve the goal. Do what makes you distinct than others. Snatch your rights by excelling in your pursuit. Do maximum for distinction in your field. So yes, it gives me an immense pleasure to give vote of thanks for today's discussion. So I would like to thank our college management, our principal ma'am, Dr. Asha ma'am,
coordinator of our BAMM department, Dr. Neha Kamble, all our staff members, like our department members, and I would like to thank our technical support team, Miss Sabia Khan, and our teachers, obviously, who are there in our department. Thank you, our guest, Miss Mohini Bamne. Okay, sorry. So yes, thank you, Mohini, for sharing your experiences and motivating our students a lot. So thank you so much. So yes, I would like to thank our participants who have participated in this discussion. Last but not the least, our audience who are there to again motivate our participants, our volunteers, and everyone present in this discussion. So thank you so much. And yes, thank you a lot. Thanks a lot, Mohini, for sharing your experiences and telling us more information about women and sports, and all the best for your future. Thank you. We can stop live streaming now, Sabia.